वेलकम टू सर अबरार यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के अलावा इमिग्रेशन, अमेरिका में कंपनी सेट करना, कनाडा में कंपनी रजिस्टर कराना, और जो इस एंटी स्पैम लॉ के किसको आप मार्केटिंग के लिए मैसेज भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, अनसब्सक्राइब को अच्छी तरह से अपनी वेबसाइट पे लिखना या मैसेज में लिखना, वो सब भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंजीनियर को ये सब नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर वो और मामलात में भी कुछ उसको जान है या नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल में वो सब ऐड किया है। बहरहाल, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि मैं हार्मोनिक के पीछे लग गया हूँ। असल में देखें, हार्मोनिक एक तो आपने शुरू से समझा है कि बस उसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरे ऊपर 10-15 वीडियो मेरी हैं हार्मोनिक्स के ऊपर, कैसे बनती है, कैसे जनरेट होती है। आपके घर में हर अप्लाइंस, जब से लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हर जगह ऐड हुआ, तो जहाँ फ़ायदा हुआ वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ, मैंने बताया हुआ है कि हार्मोनिक्स का जनरेशन हर कदम पे हर जगह हो रहा है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सी मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, बस वो समझे हार्मोनिक हार्मोनिक। तो आपने उसको ये तो बहुत समझा कि यार बहुत नुकसान है इससे, लेकिन मैं आपको ये इसमें बताना चाहता हूँ कि इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं। वो ये हैं कि जो फैक डिवाइसेस हैं, फैक डिवाइसेस में, यानी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस में, सारा का सारा खेल हार्मोनिक्स का है। यानी कि ऑल द flexible AC transmission devices are based on the philosophy and application of the resonance characteristic of the power system। और आप देखेंगे किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि फैक्ट्स डिवाइसेस बनाई गई हैं जिन्होंने फिजिकल चीज़ों को, यानी फिजिकल कैपेसिटर इंडक्टर को, उन्होंने बैटरीज को by using these devices जो आप यहाँ देख रहे हैं, टी सी, एस सी, सेटकॉम एटसेट्रा, तो how these are replaced, how these devices have replaced the physical uh, devices of large capacitor banks, large batteries, etc। इसका पर्पस सिर्फ यही है इसको बनाने का कि आपको ये बताया जाए कि हार्मोनिक्स के जहाँ इतने बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, वहीं इसको इस्तेमाल करते हुए पूरा फैक्ट्स, यानी कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन दोज एप्लीकेशन ऑफ द हार्मोनिक्स। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के जनरेशन ऑफ द हार्मोनिक्स, वो अपनी जगह। बट यू कैन सी हियर एट द बॉटम ऑफ दिस डायग्राम that this one and this one, I have, I think, more than 15 lectures and videos on these topics, where these devices, shunt and series, are defined, and you will see the connection diagrams as well, very well explained in those. So you, if you are interested, please visit those. So this lecture of today is only to remind you, you know all these things which are shown here, you know this, everything here, but you do not know these things which are given at the bottom of the diagram. So please go through my lectures on fact devices, because this is the future. And I have made another video that what are the problems and issues coming up with the application of the DLR by the utility companies, and why are they reluctant to install DLR devices and fact devices. So they are not much reluctant in application of the DLR, but they are more reluctant in application and installation of the fact devices, because these devices also involve a huge investment of billion and billion dollars, and these devices actually
uh, decrease or lessens the enhancement of the extra transmission lines, extra generation, etc. So these devices are useful for creating the capacity in the transmission line, and at the same time, the companies are saying that we have invested in planning and initiating large transmission line and generation projects, so we must be compensated. So the compensation asked by the companies, utility companies in the North America and Europe is basically on 2 points: that installation of the dynamic line rating equipment, and also the installation and adoption of the flexible AC transmission system devices. So on these 2 points, the discussions are going on. However, the pilot project have been installed on DLR, dynamic line rating, as well as on the FAC devices. Up to this point, in Pakistan, there is no FAC device installed. I think it is the need of the time that in Pakistan, the FAC devices should be installed, because we do not have enough funds to install the lines, transmission lines, and create more generation at a rapid speed. So for the Pakistan, it's very essential. Let's see what happens. So thank you very much. This is again a short lecture on FAC devices. Again, please go to my detailed videos on FAC devices, which are more than 15 in this channel. The name of the channel is Sir Abrar Ali on the YouTube. Thank you very much.